हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। टुडे वी आर कमिंग विद आ टेकिंग अ फिफ्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द क्लास 10th फिजिक्स. In this part we are discuss about the factor affecting on the resistance of a conductor and the some problems which are dependent on the length and area of the wire of resistor. Okay, so let's begin the chapter. फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं. फर्स्ट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड सेकंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, and nature of the material of the conductor and temperature of the conductor. And we try to understand these terms. Length of conductor, we know that the most of the wire in the circuits are used as the cylindrical in shape. This length is affect the resistance, and this one area of cross section of this wire is also affect the. And nature, that means resistivity, and this material means it is made up of all copper, aluminum, silver, etc. That is a material of wire. And temperature is also, temperature of the surrounding is also matter in it. So let's discuss one by one all the factors. First factor, the resistance of the conductor is directly proportional to the length of the conductor. That means if we increase the length of the conductor, then its resistance is also increases. Clear? Suppose initial length is L. If we enhance the length, it is 2 times of its length, then its resistance becomes also 2 times. This is a dependence of resistance of length. And we say that second is resistance of the conductor is inversely proportional to the area of the cross section of wire. What is the mean of inversely? That means the bottom factor is increases, then the upper section is decreases. If area becomes double, if area of the cross section of the wire becomes double, then the resistance becomes half. Then resistance becomes half. Area of cross section of the cylindrical wire is shown by pi r square, because we let the radius of the wire is r and the area of cross section is pi r square. It is equal to area of the circular part. Next, the value of the resistance is the different for the different nature material. Like metals have the very low resistance, but alloys like nichrome, manganese have the very high resistance. Next is effect of temperature. It is very important. Resistance of the all pure metals increase with on increasing the temperature. That means pure metals, on increasing the temperature, their resistance values increase. You know that in the summer days you hear the crickling sound of the wires. Clear? Whispering and crickling sound of wire. Why it is so? Due to the atmospheric temperature, more temperature increases, their resistance is increases and potential values decreases on the summer days. Resistance of the all pure metals decreases on decreasing temperature. That means in winter the potential supply is very good, because resistance value is very less. But the alloys or ohmic conductors have the almost constant resistance unaffected by the temperature. We know that what are the ohmic conductors? Most of the alloys like manganese, nichrome, etc., which are using for the heating purposes. Next, resistivity. It is defined as the measure of the resisting power of the specified material to flow an electric current. Resistivity is a term. It is depend upon the totally material of the wire. And what is we say that it is defined as a measure of the resisting power of the specified material. That means material is given, it is actually the measure how much it can provide the resistance to the wire. This is known as resistivity. Clear बच्चों? मेजर द रेजिस्टिंग पावर, यानी कितना वो रेजिस्टेंस शो कर सकता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद में. दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी. फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी आर रो इज अ रेजिस्टिविटी इंक्लूडिंग द कांस्टेंट रो आर ए अपॉन एल. एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी देखिए कैसे आया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला. वी नो दैट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. इट्स वेरी इजी. Let it equation 1, and the resistance is also inversely proportional to the area of cross section. Let it 2. Now combining 1 and 2 we get resistance is proportional to length upon area, and removing this proportionality sign we include the constant here, that is rho. It is a symbol like P, that is rho. Okay, and this rho is called as constant of resistivity, and the formula of resistance becomes from here rho into length upon area, and resistivity is called as resistivity of material. Okay, SI unit of resistivity is ohm meter. Now proof what is a ohm meter.
when the resistance of the conductor is 1 ohm and area of the cross section of the wire is the 1 meter square and its length of the wire is 1 meter, then the resistivity is 1 ohm meter. Put the value of the resistance is 1 ohm, area of cross section is 1 meter per square and length is 1 meter. Then meter to meter square, one part is cancelled and we get it the 1 meter ohm meter. Clear बच्चों? Up to here, I hope you understand the topics. Next, the some conclusion from the resistivity. Resistivity of the substance does not depend upon the thickness of area of cross section. That means like your resistance does not depend upon the change in potential difference and change in current. Similarly, the resistivity does not depend upon the length and area of the cross section of wire. Resistivity depends upon the nature of the substance and temperature. Resistivity depends upon the nature of the substance and temperature. If the material is changed, then its resistivity is changed. If temperature is changed, then resistivity is changed. See the table for the metals. Silver resistivity is 1.60 10 to the power minus 8 ohm meter. It's very low value. Like copper, aluminum, etc. And tungsten, these are the metals. But alloys, the resistivity is very high, 44 into 10 to the power minus 8 meter ohm meter. Nichrome, constantan, etc. Semiconductors are very low resistivity, and insulator have a very high resistivity again. Okay. So note some important things. Heating elements of the heating appliance are made up of alloys rather than the pure metal because their resistivity of the pure metal is less than alloys. Because हीटिंग जो एलिमेंट्स होते हैं एम्प्लायंस के आर मेड अप ऑफ अलॉयज बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ द प्योर मेटल इज लेस देन अलॉयज. Alloys does not goes under the oxidation, so they does not burn easily. Even they are higher temperature, they become glow to red hot. इसमें क्या कह रहा है देखिए, आपके जो अलॉयज हैं उनके जो फिलामेंट्स हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, दैट मीन्स कंबस्ट नहीं होंगे प्रॉपरली, यानी कि ब्रेक नहीं होंगे यहाँ से. जैसे आपका स्प्रिंग है हीटर का, वो रेड ग्लो हॉट हो जाएगा, पूरा हीट हो जाएगा, बट फिर भी वो ब्रेक नहीं होगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन. Next is the difference between the conductors, semiconductors and alloys on the basis of the resistance and resistivity. Conductors, on increasing the temperature, the resistivity and resistivity increases. If the resistivity increases, then resistance also increases by the relation, because resistance is directly proportional to resistivity, say. And semiconductors, on the increasing temperature, resistivity is decreases, then resistance is decreases. Semiconductors are the special things. Alloys, for alloys, on increase the resistivity, on increased temperature, resistivity is constant because they are the ohmic conductor. There does not depend upon the temperature. What is the effect on the resistance of the conductor when the area of cross section? These are the important problems started from here, which are depend upon the length and area of cross section of the material. What is the effect of the resistance of the conductor when area of the cross section of wire A and length L changes in the following cases? Let initial length of the wire is L, area of cross section is A, and initial resistivity is rho, that is constant. Then the resistance is rho into L upon A by the relation. Then next case, first, if the length of the wire becomes double and area of cross section remains same, that means हम area same रखेंगे और वायर की लेंथ को डबल कर देंगे. Then put the value in the formula, 2 times of L upon A, and we take the 2 as a common and we get the rho L by A. हम जानते हैं पहले रो L by A क्या हमारे पास R है. Then resistance is 2 times of initial resistance. New resistance R dash is 2 times of initial resistance. Hence next is the length of the wire remains same but area of cross section becomes double. If we get length remains same L, then we see that the wire resistance becomes half of the initial resistance. If the length of the wire becomes half, then area of cross section remains same. If length becomes half, then put the value of the length L by 2 into A. Then we observe that the resistance is half of the initial resistance again. And one thing remaining to mind, the resistivity is constant in, that means material does not change in all cases. If the length of wire remains same, then area of cross section becomes doubles. Area of cross section becomes half, sorry, not double, it's half. Then put the value, then we observe that resistance becomes double of the initial resistance. These two go on upper side. After stretching the wire, third, fifth cases, after stretching the wire, length becomes half, 2 times
बट द एरिया रिड्यूसेस टू हाफ। अगर हमने किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, सपोज हमारे पास इनिशियल वायर ये थी, देन स्ट्रेच करने वो थिन हो जाएगी, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा और लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? देन लेंथ बिकम्स 2 times and area becomes half. Then what is the effect of resistance? Resistance reduces to, resistance becomes 4 times. Resistance becomes 4 times. After folding the wire, its length reduces to half, but area of cross section becomes double. Then the resistance is 1/4. Sixth case, if the length of the wire remains same, diameter of the is d, and area of cross section we know that pi r square, and area pi d by 2. D by 2 is the radius, its square. Put this value. Then we observe that resistance is 4 times. क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब आपको यहाँ से एक कंक्लूजन पता चल रहा हो, जितनी भी आप हीटिंग अप्लायंस देखते हो उन सारों के अंदर लेंथ फैक्टर को इंक्रीज़ किया जाता है, ना कि एरिया फैक्टर को। सपोज योर इलेक्ट्रिक आयरन इनसाइडली मेड अप ऑफ द coil which increase the length factor due to increase the, we know that resistance is increased with the increase in length in spite of एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वजह हम लेंथ फैक्टर को इंक्रीज कर दे ताकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो हीटिंग अप्लायंस का। क्लियर? नेक्स्ट सम प्रॉब्लम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज 240 वोल्ट एंड द करंट इज 5 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन? Potential difference is given, current is given. We find out the resistance. We having the formula from Ohm's law. Then we get the resistance is 48 ohm. Next, if the potential difference is given and across the 3 ohm resistor is 6 volt, then find the current. So from the Ohm's law, we find the current. Keeping the potential difference is constant, then resistance of the circuit is halved. The current will be, yes, here is a numerical given. Keeping the potential difference is constant, then the resistance of circuit is half, then the current will be I by 4, 4I, I by 2 and 2 times of I. From Ohm's law, resistance is potential difference upon current and potential difference is change in current is potential difference upon resistance. First, initial resistance is half, then potential difference is same, then what is the current we need to find according to condition. देखिए हमें कंडीशन क्या दी है, इनिशियली तो हमारे पास ये कंडीशन थी, फिर इसने कहा कि रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखा जाए, तो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। करंट क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने हाफ वाली पुट कर दी है, तो आर का जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। देन करंट बिकम्स 2 times ऑफ इनिशियल करंट बिकम्स 2 times ऑफ इट्स इनिशियल करंट, क्योंकि डेल्टा वी अपॉन आर क्या होता है हमारे पास? इनिशियली फर्स्ट से करंट है, हेंस द करंट बिकम्स डबल। Next question, an electric room heater draws a current of 2.4 ampere from the 120 volt supply line. What current will from the room heater draws when the connected to 240 volt supply line? Current is 2.4 ampere, potential difference initially given, first potential difference is given, then we find the first resistance 50 एम्पियर। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें पहले से पता है कि हमारा अप्लायंस चेंज नहीं हो रहा, तो बच्चों उसका रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, तो हम सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। Then we find out the second current value of the second potential values. Okay, from the Ohm's law we find out the second current value. If the potential difference becomes double, then current is also double. Notice here, initially the current is 2.5 ampere, and if the potential difference is double, then current is 4.8 ampere, double of its initial value. Next बच्चों, fifth, a wire of the 1 meter long to 0.2 meter in diameter as the half resistance 10 ampere. Calculate the resistivity of the material. Given the length of the wire is L is equal to 1 meter and resistance of R is equal to 10 ohm. Clear? Resistance is given, diameter of the wire is given 0.02 mm, 0.2 mm, 1 meter long, diameter 0.2 mm. Clear? Resistivity given है rho.
तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या होता है कि रेजिस्टेंस है जो mm है उसको SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल 1 mm is equal to 10 to the raised power minus 3 meter. 1 mm is equal to 10 to the raised power minus 3 meter. So we convert the 0.2 into 10 to the power minus 3 meter. It's converted into meter now. It is a diameter. Now after that we are need the radius for the area of cross section. So divide with the 2 and 0.2. ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.1 into 10 to the power minus 3 meter, and we get the final radius for the relation. Now from the relation, resistivity is equal to रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है, और एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पुट द ऑल वैल्यूज। आर इज अ रेजिस्टेंस 10 ओम, वैल्यू ऑफ द पाई इज 3.14, और वैल्यू ऑफ पाई हम 3.14 ही इसमें पुट करेंगे। एंड आर रेडियस 0.1 इंटू 10³ इंटू 0.1 इंटू 10³ बिकॉज आर स्क्वायर, एंड लेंथ इज 1। आफ्टर सॉल्विंग इट, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी सोल्व द पावर। सी द पावर 10 से 10 नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने सारे डेसिमल रिमूव कर दिए। डेसिमल रिमूव करने से मेरे पास ये वैल्यू आई। सारे डेसिमल रिमूव करने से मैंने 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब नीचे मेरी पावर बन गई 10 to the power 3, ऊपर मेरी पावर क्या है? माइनस 10 to the power 6 है, और नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, टोटल पावर हो जाएगी 10 to the power 9। देखिए बच्चों यहाँ पावर कितनी बन रही है? 10 to the power 3। अब ये 10 to the power 3 जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, 10 to the power -9 टोटल हो जाएगा। तो 3.414 10 to the power -9। जब इसे और डेसिमल में मूव करूँगा एकदम एग्जैक्ट डेसिमल प्लेस तक लेके जाऊँगा फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर 3.14 10 to the power -8। जैसे हम राइट से लेफ्ट साइड डेसिमल में मूव करते हैं तो हमारी पावर्स रिड्यूस होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ द लेंथ 2 meters एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन। अब हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल विल बी 2.8 इंटू 10 to the power 8 ओम मीटर। अब देखिए गिवन लेंथ वायर की दे रखी है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतने मीटर स्क्वायर दे रखा है। सारा ऐसा यूनिट में गिवन है, डायरेक्ट पुट करेंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे। रेजिस्टिविटी इज गिवन, लेंथ इज गिवन, ऑल वैल्यूज आर गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सोल्व द पावर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। -6 -8 ऊपर -2 बच गई पावर, बाकी को हम सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस 0.0361 ओम। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर ऑफ द 1 kilometer लॉन्ग एंड द 0.50 मीटर डायमीटर। सिमिलर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लेंथ है, लेंथ को किलोमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 3 मीटर। रेजिस्टिविटी 1.70 इंटू -8 ओम मीटर ऐसे यूनिट में गिवन है। डायमीटर mm में तो उसे मीटर में कन्वर्ट किया, फिर उसकी रेडियस निकाली, फिर रेजिस्टेंस निकालना तो रिलेशन में पुट कर देंगे। सबसे पहले पावर्स को सोल्व कर लेंगे। 10 to the power 3 है तो ऊपर माइनस का 3 बच गया, कैंसिल हो गई पावर। ऊपर क्या बचेगी? 6 और 3 9, 9 में से 3 गई, 6 बच गई फिर से पावर। नीचे बचा हमारे पास 25 × 25 625 314। फिर अपन इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 86.6 ओम। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। और यहाँ तक इस पार्ट में रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस है और ओम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। एंड फॉर द फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।